Start. Hello everyone, very good evening. Okay, welcome to the Createx channel. So we are going to conduct one mock interview with one of our aspirants. So we'll be starting the session soon. Right. So we are with the panel of expert in EC, that is with EMFT and EDC. Our great Suresh sir is available with us. Expertise from the past 20 years in various fields of electronics and engineering, electronics and communication engineering. And we are having Rajat. He is the interviewee today, and he will be answering the questions for us. So let's start the session. Suresh sir, you can take the charge. Thank you, sir. Thank you, Bhima Shankar sir, for giving this a chance and Createx channel. Students, this is a mock interview which is expected to know what sort of questions will be asked in your interviews. You could be going for any PSU, you could be going for BARC, or you could be going for any other interview, BL or anywhere. These are the sort of questions that generally that will be asked upon, right? So we're going to give you a few details on that basis. So Rajat, hi, nice to know you. Introduce about yourself. Hello, sir. Sir, my name is Rajat Kumar. I belong to Bathinda, Punjab, and I have completed my graduation from Punjab University, Chandigarh, in Electronics and Communication branch in year 2015. Also, I have worked in PSU MTNL for almost 4 years. Currently, I'm pursuing my preparation for ESE mains. Okay. What exactly is the difference between BSNL and MTNL? What are their, profiles? Sir, actually, जो starting में डिपार्टमेंट टेलीकॉम था only, but उस टाइम दिल्ली मुंबई में जो था, जो कनेक्शंस फास्ट करने के लिए स्पेशली दिल्ली और मुंबई के लिए बनाया गया था MTNL, एंड बाकी जगह डिपार्टमेंट टेलीकॉम में देख रहा था। वो 1980s में समथिंग MTNL बना, एंड फिर उसके बाद जो ओवरऑल पूरे बाकी इंडिया के लिए वो BSNL बना अप्रोक्सीमेट 2000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट वर्किंग सेम है, बस प्लेसेस का डिफरेंस है एंड थोड़ा HR पॉलिसीज में डिफरेंस है, एंड प्लस MTNL रजिस्टर है स्टॉक मार्केट में। Okay, that's why it's Mahanagar Telecom. Yes sir. And this is Bharat Sanchar. Yes sir. Okay. Bhima Shankar sir, you want to ask a few questions or shall I? Yes, sir, definitely. So, where are you from? You said. Sir, Bathinda, Punjab. Okay. Is there anything special about your place? Sir, there is Kila Mubarak in Bathinda, and the first female Mughal emperor Rajia Sultan was jailed here, and there is one Gurdwara also inside the Kila. Okay. So that is about the historical importance of your place, right? Yes, sir. Okay, great. So you are already working with, you work with some PSU, right? I think yes, you are comfortable with that. So why you want to yes, switch to some other domain? Is there any particular reason for this? Are you not comfortable with MTNL? Yes, sir, because it was loss making. Also, it was no future. So, and I thought I deserve something better. So I started preparing for GATE and ESE. And also I scored better in GATE. So I decided to switch. Okay. Suresh sir? Yeah. Rajat, what are your favorite areas, which you feel you're very comfortable with? Sir, EDC. काफी familiar हो और आप चाहे तो हिंदी में भी बात कर सकते हो। अच्छा। Sir, EDC, digital control signal. Okay. Right. EDC की बात करते हैं। तो MOS capacitor के कितने modes होते हैं? What are the various modes in which a MOS capacitor can work? Sir, accumulation mode, depletion mode, and inversion mode. इनमें से कौन सी मोड में वो वेरिएबल कैपेसिटर का काम करती है? सर उसमें करेगा डिप्लीशन मोड में। Okay. In which of these modes the capacitance is equal? कौन से मोड्स में कैपेसिटेंस बराबर होती है? सर डिप्लीशन मोड और इन्वर्शन मोड में, एंड इन्वर्शन मोड में भी लो फ्रीक्वेंसीज पे। डिप्लीशन मोड में ऑलरेडी सॉरी accumulation mode and inversion mode. Okay, they want equal capacitance. Yes right? sir. Right. एक
सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पे इन्वर्शन मोड होता ही नहीं है. In what situations a MOS capacitor cannot exhibit inversion mode? सर वो हाई फ्रिक्वेंसी पे. Very good. Any reason for it? सर हाई मतलब अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पे पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल है उनको और टाइम नहीं लगेगा, मतलब टाइम नहीं मिलेगा मूव होने का, वो एकदम पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. Excellent. So the inversion process is tough because it has to Yes. overcome the depletion part, and then it has to invite the other carriers. Yes sir. जो p region है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए. इन्वर्शन का Yes, मतलब sir. वही है ना, तो वो काफी देर Yes, हो जाती है. So because of that, it's very tough to switch on and call the opposite carriers in a very short span of time. That's high frequency. Very good. Okay. Sir, you can ask a few questions or you can ask. Yes, sir. Definitely. You are also comfortable with digital, right? Yes sir. Yeah, let's discuss regarding this self-complementary code. Do you know about self-complementary code? Can you explain about that? सर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड ग्रे कोड को बोलते हैं. No. सेल्फ सर नोट ध्यान में नहीं आ रहा है. मे बी एक्सेस 3. Yeah, access 3 is Have a more एक्सेस relaxed body 3 language. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री. Relax. Rajat, relax. Have a more relaxed body language. Yes. Get relaxed, get more familiar. You can smile in between. We don't really, anybody, any interview panel, you can smile, you can relax. It's not to be very formal. I mean, हर कोई इंटरव्यू में इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है. जितनी आपकी लैब वाइवा में होती है ना, उससे तो काफी कम ग्रिलिंग होती है आप पे. So relax. Yeah. So continue, sir. Okay. सर एक्सेस 3 होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड. तो जैसे 000 का हमारा 000 का एक्सेस 3 होगा 00111. Yeah. एंड जो हायर और बिल्कुल स्टार्टिंग और लोअर होगा वो आपस में सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. Okay. So, I mean, what is the logic behind this self-complementary code? Why access 3 is called self-complementary code? नहीं सर उसका आइडिया नहीं. Okay, it's fine. Great. No issue. Right. Is there any, what is the logic? Anyway, we discussed about the self-complementary code. That's fine. Now, let's discuss why we do these complementary operations. What is the logic behind? Is there any advantage with this in number systems? Why we study all this stuff? Complement, one complement, post complement. Yeah. सर आई थिंक बिकॉज जो हमारा मशीन है, कंप्यूटर है, उसमें अगर हम किस सब्ट्रैक्ट करना है, Yes. तो उसका कुछ वो नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, एडिशन ही होता है. तो अगर मुझे a माइनस बी करना है तो मैं b का 2's कॉम्प्लीमेंट करके ऐड कर दूंगा, तब मेरे को सब्ट्रैक्शन मिलेगा. Yeah. तो वो यूज है. Okay, partially we can say actually subtraction is there, but if you use extra hardware for subtraction and extra hardware for adder also, it will be your hardware will be increased. So to improve the cost effectiveness, we'll go for the same circuit which can do both the operations. So this complementary operation, that is you said to one's complement, two's complement, is it confined to binary number system, or we can apply this to any number system? Sir, any number system. Okay, so can I do subtraction of decimal also by this complementary? Yes, sir. Okay, so can you suggest that? Suppose I want to do a minus b in decimal number system. What's the process for that? सर उसमें हम डेसिमल में 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Very good. कि a माइनस b करना तो b का 9th या 10th कॉम्प्लीमेंट करके उसका फिर अलग रूल रहता है. So ultimately we need to do r minus 1's complement or r's complement. That is what we call r is the base of your number system. Fine. Great. Yes, sir. So Suresh sir. Other than EDC, what else are you comfortable with? Analog. Analog also some topics. Okay, you are comfortable with analogs. Yes, sir. EDC semiconductor physics, you are comfortable with? Yes, sir. What do you understand by continuity equation in semiconductor physics? So continuity equation में हम एक small जो small area है, जहाँ small एक location है, means small volume में कितना change हो रहा है current में, current density में कितना change हो रहा है, तो वो हमें पता चलता है. थोड़ी और elaborate कर सकते हैं? सर उसमें हम basically continuity equation में देखते हैं कि
एक तो करंट कितना एंटर हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है, फिर जो स्मॉल वॉल्यूम है उसके अंदर कितने होल्स या चार्ज पार्टिकल जनरेट या रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो इन सबको कंबाइन करके हम बेसिकली वो निकालते हैं कि चेंज इन करंट थ्रू द स्मॉल वॉल्यूम, Okay. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। Continuity equation tells you about the current changing with space because of a charge moving with time. इसीलिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम भी होगा, डिस्टेंस भी होगा, डो बाई डो एक्स भी होगा, डो बाई डो टी भी होगा। तो बदलता हुआ समय के साथ जब चार्ज आगे बढ़ रही है तो उस स्पेस में जो करंट जनरेट होती है, इन दैट स्पेस द करंट जनरेटेड along with the generation and recombination because of external sources like light and heat, इन सबको साथ में लेके continuity equation बनती है। Okay, so that's a very good answer what you gave, but you should use the word time, space, recombination, generation, 4 aspects. Very good, very good answer. So your semiconductor physics knowledge is awesome if you could answer this, right? Can you tell me what is the difference between Faraday's induced EMF and Hall induced voltage? सर होल इंड्यूस वोल्टेज में हम करंट पास करते हैं एक स्पेसिमेन में, एंड उसके 90 डिग्री पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। एंड फैराडे में अगर हम किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस करंट है कहीं पे, हम वहां पे नो फैराडे में एक बार फिर हॉल इफेक्ट इज ब्यूटीफुल, परफेक्ट। एक बार फैराडेज लॉ सर फैराडे में आई थिंक हम B × I, उसमें हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं या फिर एरिया चेंज हो रहा होता है, बट हॉल में नहीं होता ऐसा कुछ। चेंज इन एरिया या फिजिकल मूवमेंट आप करते हो, फिजिकल मूवमेंट, यस, तो वोल्टेज आ जाती है। यस सर। यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट करंट के जरिए करते हो तो वोल्टेज आ जाती है। यस सर। So both are almost similar. The physical movement is because of a current, and that's what we call it as Hall voltage. वहां पे physical movement is moving some coil, moving with water. तो वहां पे physical movement एक्सटर्नली आप करते हो, समझ रहे हो ना? इसीलिए दोनों में लॉरेंस लॉ के जरिए प्रूफ होती है उसकी। Faraday's law can be proved with Lorentz law. Hall effect can also be proved with Lorentz law. Okay, sir. The correct word you have to use is this: physical movement is done by the current, or physical movement is done by the moving coil, by moving that coil. So you're good at EDC also. It shows your caliber in EDC is good. When you talk of a BJT, why do you think the BJT is called as a bipolar device? सर बिकॉज इसमें जो करंट है बेसिकली वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरी दोनों की वजह से होता है। कौन से रीजन में मेजॉरिटीज, कौन से रीजन में माइनॉरिटीज? सर जो हम एमीटर, जिस एमीटर में एनपीएन है, तो एमीटर करंट होगा मोस्टली वो एन की वजह से भी होगा, एंड जो बेस से जो होल्स डिफ्यूजर होंगे उनकी वजह से भी होगा। तो कलेक्टर का क्या रोल है? तो सर कलेक्टर बेसिकली वहां पे हम आउटपुट करंट लेते हैं। तो कौन से रूप में, होल या इलेक्ट्रॉन करंट के रूप में? इलेक्ट्रॉन करंट मेजॉरिटी अगर एनपीएन है तो। बट कलेक्टर बेस तो रिवर्स बायस है ना? बट सर जो हम यस सर, बिकॉज बट एमीटर बेस जो हमारा फॉरवर्ड बायस है, तो जो इलेक्ट्रॉन है डिफ्यूज होंगे बेस में, तो हमारा जो ग्रेडियंट बनता है बेस रीजन में, तो वो पार कर जाते हैं बेस रीजन को और कलेक्टर में जाके रिकम्बाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट आता है। Okay, so majority carriers in the emitter. Yes sir. Majority carriers in the base. Yes sir. And minority carriers in the collector. Minority, yes. So ultimately majority and minority carriers both are participating in it. Yes sir. So that's why it's bipolar. Okay, very good. What about an FET? Why is this now called as unipolar? Sir, because FET में only majority charge carrier की वजह से करंट होता है। Why? Sir, because इसमें गेट है, चैनल है,
P रीजन गेट है, N चैनल है, तो सर वहाँ पे अगर वहाँ पे जो गेट है, गेट और जो हमारा चैनल है उसके थ्रू अपना चार्ज कैरियर पास नहीं करते हैं। क्योंकि गेट इज वेरी थिन एंड हेवी डोप, ताकि और माइनॉरिटी रिवर्स बायस रहती है तो रिवर्स बायस कर दिया ऊपर से, तो कुछ कोई करंट तो है नहीं है। ओके, सो कैन यू एलैबोरेट अबाउट working of the BJT? Can you speak a few words about what is a BJT and how does it work? सर बीजेटी में 3 होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसमें से सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमीटर की, बेस की, उसके बाद एंड कलेक्टर की। एंड अगर मोस्टली बीजेटी 4 रीजन में ऑपरेट करते हैं हम, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ एंड रिवर्स एक्टिव। मोस्टली हम एक्टिव रीजन में ही ऑपरेट करते हैं, जैसे एम्पलीफायर के लिए, तो उसमें बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस होता है एंड कलेक्टर बेस रिवर्स बायस। तो मोस्टली जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, वो एमीटर से बीजेटी में डिफ्यूज करेंगे, सॉरी बेस में डिफ्यूज करते हुए कलेक्टर में जाएंगे। और एंड बेस जैसे जैसे बेस हेवीली डोप्ड है ना, बेस हेवीली डोप्ड तो बेस में से एज बाहर आ कम्पेयर टू जाएगा, कलेक्टर से। एमिटर और बेस हेवीली डोप्ड है तो एमिटर से बेस में बाहर आ जाएगा ना। नहीं सर, बेस एमीटर से कम डोप्ड है, कलेक्टर से कम डोप्ड है, मतलब कलेक्टर कलेक्टर से नहीं, बेस की डोपिंग एमीटर से कम होती है, कलेक्टर से ज्यादा होती है। कलेक्टर से ज्यादा होती है ना, यस सर। तो बेस से करंट आ जाना चाहिए ना, उसमें माइक्रो एम्प्स ऑफ करंट क्यों आती है? सर The बिकॉज doping is so high. बेस का जो रीजन रहता है बहुत थिन रहता है, तो उसकी वजह से बेस रिकम्बिनेशन रीजन, बहुत कम होता है तो बेस में। बेस रीजन का थिननेस की वजह से। यस सर। So उसकी वजह से बेस करंट इज इन माइक्रो एम्प्स। यस सर। Bhima sir, you can take it. So I think we are going anyway in the technical. So let me go through some general questions. So Rajat, you already worked in PSU, right? Yes, sir. And again, you are aiming for some other PSU or some other government sector. You want to be in the public sector because you are from EC. You got a very good rank in the GATE also. Many people these days are going for the core companies and MNCs. They are going for they are getting a very good packages with their Mtechs and all those things. Why you opted this particular field of this area of your interest? Is there any particular reason for this? सर एक्चुअली एमटेक भी हमने जैसे बोला कि बहुत अच्छा वो है, बट थोड़ा ये है कि अभी जॉब पे ज्यादा कंसंट्रेट है पढ़ाई से बस, बट आई नो ऑप्शन बहुत अच्छा है उधर। Okay. Why any specific reason why public sector only? Why not private sector? क्योंकि सर अभी मतलब 4 से 5 साल जॉब की है, तो अभी स्विच करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। अगर स्टार्टिंग में अगर चला था तो No, I'm हो जाता asking, okay, you want to go for a job. Why don't you try for some other companies of your core, like Intel, Qualcomm, whatever it be? Why you are going again for the same public sector area? Why you want to go for this service sector or something? What's your motivation behind it? सर एक्चुअली ये है कि अगर किसी भी कोर कंपनीज में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो मास्टर्स करना ही पड़ेगा, कि जो ग्रेजुएशन का कॉलेज है वो इतना अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से एक आईआईटी या एनआईटी का टैग तो चाहिए। बट वही है कि उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, अभी बेसिकली कोर्स वर्क करने में, तो वो रीजन है बस। Fine, okay. Say if you got an offer right now based on your GATE scores in some private sector also, today you got some offer without any higher studies, still you prepare for these exams, or still you want to go for this ESE examinations and all, or you want to go for this private sector? नो सर, अगर सब अच्छा है तो आई कैन स्विच, आई हैव नो इशू। Okay, fine, right. You worked with MTNL, right? Yes, sir. What's your role there, and what's your nature of work there? How your day in the particular PSU? You will be working with technical or managing the people. Can you elaborate your role there? सर एक्चुअली उसमें मोस्टली मैनेज का ही काम था, कि जैसे मेरा वर्क था ऑप्टिकल फाइबर का, जो ऑलरेडी नेटवर्क है उसका जो मेंटेनेंस है एंड लेइंग ऑफ न्यू नेटवर्क।
एंड उसमें कहीं भी अगर कोई फॉल्ट आता है, जहाँ कुछ नया कुछ ले करने किसी बिल्डिंग में, तो वो देखना होता था। प्लस वहाँ पे मुंबई सिटी सर्विलेंस का प्रोजेक्ट है, जिसमें सीसीटीवी कैमरेज हैं ऑल अक्रॉस मुंबई। तो उसका जो फाइबर कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, वो एमटीएनएल प्रोवाइड करता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें मैं था, तो उसका मेंटेनेंस भी हमें करना पड़ता था विद कोऑर्डिनेशन ऑफ एलएनटी, क्योंकि एलएनटी का मेन प्रोजेक्ट था वो। एंड वो कैमरास वगैरह मेंटेन करते थे, हम उनको कनेक्टिविटी देते थे। So you'll be working with locating the faults in the fiber cable, all those things. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Okay. So one more, I think this is the last question from my side regarding the technical. As you said, digital is also your area of the interest. Might be you studied microprocessor also. So yes, can sir. you explain the different addressing modes in 8085? सर 8085 में बेसिकली 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। बेसिकली एड्रेसिंग मोड हमें बताता है कि हमारा ऑपरेंड कहाँ स्पेसिफाइड है। इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड एंड ऑपरेंड होता है। तो सबसे पहले रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, उसमें अगर जो हमारा ऑपरेंड है वो किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में होएगा, जैसे मूव ए कोमा बी है, तो बी में हमारा ऑपरेंड है। एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्ट एड्रेस स्पेसिफाई कर देते हैं इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड का। एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में हम जो एड्रेस है ऑपरेंड का, वो हम किसी रजिस्टर में स्पेसिफाई करते हैं। जैसे एचएल पेयर में जो डेटा होता है वो किस एज हम एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। एंड इमीडिएट में हम इंस्ट्रक्शन में ही डायरेक्ट ऑपरेंड साथ में इंस्ट्रक्शन के साथ लिख देते हैं। Okay. एंड I understood. Fine, you got it. Why all these addressing modes? Is there any specific advantage with any particular addressing? Why we go for all these addressing modes? सर एक्चुअली आई थिंक जो प्रोग्राम, जैसे तो हम ओनली इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, जैसे प्रोग्राम है किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में कभी जरूरत पड़ सकती है कि हमें मिनिमम हमें मेमोरी या टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजें। जैसे एचएल पेयर में हमने एक बार डिफाइन कर दिया। So minimum memory means that is depending on the size of the instruction. Okay. Yes. We are dealing with here addressing mode. Why should we have all these addressing mode? Is there any specific advantage with any particular addressing mode? Which addressing mode can help you in which particular way? Can you elaborate that? सर जैसे हमने रजिस्टर इनडायरेक्ट है, जैसे हम एचएल पेयर में हमने एक एड्रेस डाल दिया है। Okay. तो हम अगर मुझे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करना होगा तो मेरे को 3 बाइट लगेगा। जैसे लोड एक्यूमुलेटर है, इंस्ट्रक्शन है। बट अगर मुझे बार बार मेमोरी को एक्सेस करना है कंटिन्यूस, तो अगर मैं एक बार एचएल में डाल दूंगा तो उसको इंक्रीज करते करते मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसमें आई थिंक हमारा जो बाइट है कम लगेगा डेट प्रोग्राम का। Fine. So what about the other addressing modes? सर अदर में अभी हो सकता है कि इमीडिएट, जैसे कि हमें किसी डेटा को सिर्फ एक बार यूज करना है, तो किसी जरूरत नहीं है किसी पहले मैं रजिस्टर में स्टोर करवाऊं फिर वहां से मूव करूं, तो मैं डायरेक्टली उसको इमीडिएट यूज कर सकता हूं। Okay, fine. Okay. So Suresh sir, I think we can wind up this and you can share the feedback. I have noted few points that I'll also share from my side. You can start, sir. Sure. His confidence levels are good, sir. Subject wise is all good. Body language is also quite good. Only thing, one suggestion is you can take 10 seconds before you answer a question. Okay, sir. There is no rule that you have to immediately answer it as soon as the teacher is asking you. You can say, sir, I'll frame the answer. सर मेरे को ना थोड़ी आंसर को फ्रेम करने के लिए टाइम दो, क्योंकि किसी ने भी कुछ भी पूछा तो ये जरूरी नहीं कि वो उसके आंसर एकदम आपके ब्रेन में एकदम लगातार एक सीक्वेंस में हो। तो you can take time. That's the only thing. It's better you take time. Otherwise, you can tell it immediately also. But if you take, you can frame it much better. Okay. बाकी prepare your project well. आपकी जो बीटेक या एमटेक की जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर करके चाहिए, उसके बारे में भी, या आपकी जॉब प्रोफाइल जो आपने बताई वो भी प्रिपेयर करके चाहिए। Rest all it's fine. It's excellent. There's no doubt about it. Okay. Thank you, sir. So from my side, I can give you a few points. See, when you are going for any company, you should show why you are going to join this company. Don't say this is an alternative for me, sir, because I don't want to study. I want to come here. If I get a private job, I don't come here. Don't show that.
you can give that why facts can be different, but when you are explaining him why you want to join here, this question you need to explain, because these are the stock questions. This way, anyway, they will ask these questions in most of the interview. So if you are going for any company, know about it and say that this is the reason, solid reason you can explain. Okay, I love this nature of job. I want to bring some changes in this. Some stock answer you can prepare priorly and go for it. Don't say it is a choice for you, because I'm not getting. I don't have the patience to study Mtech. They may think that after coming here, also you may not be having time to prepare. Like that, they can. That is one thing I can say. The second thing is here. Always try to turn interviewer towards your strength. Suppose if the question comes from your area of interest, always try to answer it such that interviewer will ask you another question from the same topic. Okay, if you are able to do that, you can do it. And one more thing I observed, you said there is no growth in MTNL. Please never say wherever you worked earlier. You say, I'm satisfied here, but I'm looking for a better growth, or I want to go forward in this particular direction. You can say, but don't say that there is no growth there. So I left it. Those kind of words, please don't use it. I mean, always go in a positive way. Surround whatever the things you have done in the future, whatever you want to do it in the future, or what you have done in the past. All you change it in a positive way. Explain him in a positive way. And there is no need you need to answer every single question. It is impossible, because in half an hour they cannot judge your knowledge. Sometimes it is quite natural, even you know the content also, you may not be able to answer it. That's fine. Technically, you have answered almost many questions. 1-2 questions you have answered what, but sometimes you may miss like self-complementary code, where why also please try to know why this. Okay, question after question you frame while studying itself. If you are habituated, why self-complementary code? What is the advantage? Why like this? Why not like this? These kind of analysis, because while writing the exam, it is okay. If we know the answer, it's fine. But here, these analysis, these corrections you made, reminding all you made explain. Almost every question you have shown some comment on the subject. Whoever introduced you, they will be getting the knowledge. They will be getting the concept that he knows something. That impression you are able to give. Okay. Fine. All the best. I hope you will be doing best in your upcoming all interviews. Fine. All the best. Thank you. Please, sir. Bye, sir. Yes, sir, it's fine. Yeah. Okay. Then we can call the session, sir. Then Yeah. upload something. Okay, sir. We can leave, sir. Yeah, sir. Bye, sir. Bye. Okay, sir. Thank you for your time. Thank you, Yes, Rajat. thank you, Rajat. सर मेरा एक दो क्वेश्चन है. Yeah, sure. सर मेरा एक्चुअली नीलिट में इंटरव्यू है साइंटिस्ट बी का, तो उसमें किस टाइप का टेक्निकल हो सकता है? In NILIT, you have to be aware of the current technologies also. थोड़ी बहुत साइबर सिक्योरिटी पे भी कमांड होना चाहिए. थोड़ी बहुत कंप्यूटर नेटवर्क्स पे पढ़ के जाइए. ठीक है. बाकी it's all manageable within easy syllabus. Cryptography, network security, and cyber general computer networks. They are the additional subjects you have to handle. Okay. That's all, it's fine. And moreover, you know all the activities of NILIT. उनके सेंटर्स कहाँ पे हैं, apart from Calicut, और कहाँ पे सेंटर्स हैं उनके, और उनके ongoing projects किस किस में हैं, and post COVID उनकी हालत क्या है वो भी जान लीजिए, because before COVID it was very good. Okay, post COVID some of their courses are not doing well, they're not even learning. नीलिट में भी STQC है, like वो भी शायद अलग डिपार्टमेंट है ना उनका. Yeah, there are a lot of departments in it. You just know all the activities of NILIT. Calicut के अलावा और कहाँ पे branch है वो भी पता कर लीजिए. Actually base तो Calicut का है, but they've got branches in different places. So find out about that and find out their ongoing projects now. Okay sir. And sir जो gap को कैसे justify करना, like मैंने last year जुलाई में resign किया है, तो अभी तक उसको कैसे justify करना है? Last year July मतलब अभी तक एक academic year नहीं हुआ ना? Yes sir. Yes sir. So you can just say that you're preparing for various competitive exams and you cracked the gate already. Yeah, I think you got top 100 rank only, so it's not an issue. You have utilized your time, so it's not a problem. Okay sir. Okay, so thank you sir. Thank you Rajat. Thank you sir. Yeah. Thank you so much. Thank you. Rajat, you can log out. Sir, Yes.
Yes, sir. Yes, Okay, sir. Still, it's going on. Okay, sir. You can give. I'll give some details regarding plus subscription. Okay. Yeah. So guys, if you want to go for Unacademy, as you know, many of the toppers are made from Unacademy. If you want to go, you can take the Unacademy subscription, guys. And you can use any of your favorite educator code. And this is also my code. You can use it. You'll be getting 10% off on Unacademy subscription. And there are many new batches started this recently. And these are our toppers who made it this year. And these are the features of our iconic classes, special classes, and the combat exam, which happens every Sunday. And this time, Ultra Combat is also going to happen. And these are our features of our plus and iconic subscriptions. Thank you for your time. All the very best to all other participants who are appearing. Thank you very much, guys. Thank you. Everyone, so let's continue our discussion. So I want to give you some important update. After this video, please go through the link which is available in this video description. Why? Because in this video description, you will be getting one examination link. So subscribe, use that link and join and give your exam, guys. I think it will happen at 9 p.m. or 8 p.m. According to the time, you can open that link and you can check. Okay. So it is completely free for you guys. You can attempt that exam. So just immediately after the session, just click in that and enroll to that. You will be getting all the details regarding the exam. Okay. So I hope you utilize this opportunity. So I hope you enjoyed the session. Thank you. All the best. Let's crack it.